विकल्प स्टार्ट करते हैं आपका फुल मॉक फॉर UPPCL कोर्स. You are electrical engineer. Yes. Okay. तो अपने बारे में बताइए कुछ. Well, my name is Vikalp Chachar. I belong to Kanpur. I did my high schooling and intermediate from the Kanpur itself, and I completed my graduation in electrical engineering from IIT Kanpur. After that, I worked in the solar click thermal power plant in Mumbai, and after second opportunity I got at the CITB Incubation Center. I worked there as a research assistant engineer, and now I'm appearing for UPPCL assistant engineer in this exam. And my hobbies are sun salutation and meditation. Your hobbies are Sun salutation and meditation. meditation. So meditation, how meditation is your hobby? Do you do it regularly or you get time? No, I'm very punctual. I do every time in the morning. I took 30 minutes in the morning, and if I get time in the evening, yes, because we have now very busy schedule, so I'm very health conscious, and meditation is best way to keep healthy. Okay, so you did your B.Tech from IIT Kanpur. Yes, right. In which year? In 2011. 2011. Or since then you are working with the. I work mainly in energy sector. I got two opportunities. First, it was in Mumbai, Maharashtra, and the second it was a CITB incubation. That is a headquarters in Lucknow basically, but it's a branches in Noida as well. So do you know that your grade pay or pay will be very less as compared to your experience now? Well, actually, I think every opportunity gives something to learn about, and I'm looking to work in my own state more for the time being. So even if there is slight shift, I think I can able to learn, and I think it's a good opportunity for me right now. So you work in the thermal power plant. Yes. What was your job profile there? I was a simulation engineer. I have to simulate the plant and check all the design, how components works, their specification. So you were the simulation engineer. Yes, the first opportunity. What was the capacity of that plant? Capacity of that plant was 1 megawatt. It's a 1 megawatt generating capacity. Solar thermal power plant. Solar thermal. Yes. 1 megawatt. Oh, yes. 1 megawatt. Yes, 1 megawatt. So it is captive plant for their use only, or they are supplying to grid? No, this that was basically their initial plant test whether the how can solar thermal be utilized for the grid operation. So initially they designed for 1 megawatt. Further they will expand to whatever the government will ask them to do. So what was the principle of solar thermal energy? The simple concept is simple. The sunlight is there. It has visible spectrum. It has UV spectrum. And solar thermal can utilize both ranges. It can utilize infrared radiation and UV radiation, both. Entire spectrum it can utilize. So in terms of utilizing solar energy, it is far better than PV. So it uses concentrator, parabolic concentrator. It concentrate all the light at one point, and the temperature become very high. So steam that is coming, it converted to steam. Then steam is utilized at with high temperature and pressure for some purposes. They like in my case, it was utilized for generation of electricity, and the same utilized can be used for cooking as well as industrial purposes like evaporation of salts, etc. So steam that we are producing from this plant can be utilized in the industry as well. Okay. This is underlying principle of it. Okay. So what was the efficiency you observed for that plant? Efficiency of the plant was something
something that comes around 16% around. Only 16%. Yes. After generation of electricity. After generation of electricity means from energy efficiency from input to final output, not just the thermal unit I'm talking about. Okay, what is linear input? Input energy, how do you calculate input energy? Input energy, that is solar radiance is there. We know what is the intensity of sunlight per square meter, and we have taken area of the per parabolic refractor, and how much sunlight we are collecting. So we know how much light is coming. So that is the input here. You said your efficiency was 16%. Yes, yes. And there is lot of mechanical and maintenance requirement in your solar thermal plant. Yes, 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 it is there. But in case of solar PV panels, we can get the efficiency now 16-17% without any maintenance. Yes, it is true in terms of efficiency. It is nearly equal. It is not to not much higher in terms of efficiency, because if you have to generate steam, and steam you have to further condense it, a lot of energy lost in that process. But I said steam that is produced here can be utilized from other purposes like cooking. In the southern India, it is used for cooking purposes. As well as the same steam that is produced here can be utilized for industrial purposes, like evaporation plant. So apart from electricity, this project has other application where PV cannot be used. Okay, what is your favorite subject? My favorite subject electrical. I'm in touch with it, and that is why I'm appearing for UPPCL. Electrical. Yes. Electrical बहुत vast हो जाता है. Yes, it is vast. It is vast level, but I still be in touch. I'm revising. We're learning always. I'm appearing for GATE as well. Okay. Okay, what is maximum power theorem? Excuse me? What is maximum power theorem? Maximum power? Theorem. Your last word is not audible actually. It's like flashing it. What is maximum power transfer theorem? The maximum power transfer theorem says that if is there a source, it is transferring power to some load, and load that is variable. So the maximum power will transfer only when then the load is the conjugate of the source impedance. In that condition, the maximum power will transfer from source to load in. Practically, this concept where we use maximum power transfer we use in terms of impedance matching. In the real time, we use for impedance matching like loudspeaker as well. In those conditions, we take input and we want the output should be sufficient high. So for impedance matching, we use maximum power theorem. So another transformer where we put the Buchholz relay. Buchholz relay is placed between the conservator and main tank. Conservator. Generally, at what level conservator tank filled up with oil? Well, sorry, exactly, I'm not aware what is the level of oil actually. The transformer होता है. Okay. We have a transformer 100 kVA 220 volt oblique 110 volt. Yes. We have to convert this transformer additive polarity as a auto transformer. In unity transformer? Auto transformer. In auto transformer, yes. The voltage level of auto transformer became 330 volt oblique 110 volt. Yes. So what will be the new rating of transformer? New rating of the transformer, actually, you have to calculate it. Really, can you give some time actually? You can use that answer. Okay. So,
rating of the single phase transformer is 100 kVA in 20 volt oblique 110 volt. 100 K. What is the turn ratio of the transformer? 220 oblique 110. I guess it's 150 kVA. Now Rajiv sir will take. Okay, Bikal. Yes. Bikal, am I audible? Yes, you are audible. Okay, Bikal. So you currently are working, right? No, I'm right now. I'm not working. Actually, I left the project because it was finally commissioned, so I left it. I was doing online teaching basically. Online teaching. What are the subject you generally teach? I teach electrical basically. Electrical is subject. Yes. What are the subject you generally teach in electrical? Electrical subject could be anything. It depends on the what is the student want to learn basically. So, but mostly it is for network and some like power system something, and it could be and other signals and other like power electronics topic. Power electronics and power. I teach mainly network I will teach and signal systems and some sampling theorem basically. And depending on what the candidate student want to learn, so I can teach it actually. It's not. You have know about all the subjects. Yes, depending on requirement, what I'm asked to teach actually. Okay, in power electronics. Yes. Hello, Bikal. Yes. Okay, now I'm audible. Yes. So there was a network issue. So you generally teach electrical machine. Yes. Okay. Have you any idea about what is a pulse transformer? Pulse transformer, it is used in a high frequency application, and what is the working principle? Working principle, I'm not much clear about it actually. Working principle? Sorry, I'm not much in detail. Much know that I know its application is in high frequency applications actually, and it is used mainly used to reduce where the size of the component will become lesser actually. Okay, any idea about what is phase shifting transformer? Phase shifting of transformer, it is utilized for the transfer of the shift in the phases of the incoming signal. And how it is done? Well, sorry, again, I'm not much knowledge about its working of it. Okay. What is BFD? What is? What is BFD? BFD. Variable frequency drive. Yeah. The concept of variable frequency drive is that we change the frequency so then we can vary speed of the system. That's the underlying principle over which it works. Okay. And how it is different from the variable speed drive? Advantage of the variable speed drive. Speed drive, I can compare both the things actually because I don't know much about the speed drive. I know about only the variable frequency drive, how it works actually. And how the BFD controls the pressure? VFD, sorry, I'm not. I don't know much about the VFD actually. Okay. Suppose if in a single phase transformer, there's a double field revolving theory by which it is being balancing at an angle of 90 degree. If it is less than 90 degree, what is the consequences? What will be the consequences if it is not balancing in a single phase transformer? What is double field revolving theory? Double field revolving, that a magnetic field has two components. One is a forward component, other is a backward component. Backward component. Okay. Both components involved with the synchronous speed, but in opposite direction. So the net magnetic force that is applied on the single phase motor is zero. The net torque is zero, so it is not self-starting. That is a double revolving concept actually. And what is the angle in which it is being balanced? Well, sorry, I'm not much aware about the angle of it.
Okay, angle is balanced at the 90-degree. Any idea that if it is less than 90-degree, then what are the consequences? 90-degree. So give the example, practical example. Then it might be there can be shift in particular one direction, but it will be further pulsating actually. Okay, or give the practical example. So I sorry, cannot give the practical example of it. Practical example of a single phase single phase induction motor where the load is being balanced. The balance one that we use in the fine our fine we use single phase induction motor, and we all very domestic application we use for like mixer for mixing application we use single phase induction motor we use. Mixer purpose. Okay, tell me one thing. UPPCL, it is governing the regulating and the transmitting of the practical power, right? Yes. Okay. So if it is less than it is required, or if it is more than it is required, then how the power is being transmitted and how it is being actuated? If the demand varies actually, so how we regulate it? Yeah. How the regulation is being done, and what is the particular department or particular software regarding which it is being regulated? It has state load dispatch center that it monitors the optimum scheduling and transmitting of the power, that where the power will be transmitted and where it should be cut it, and what the remaining power has to handle. So that is done by SLDC, state load dispatch center. Good. And what this state load dispatch center generally do? Pardon me? What this state load dispatch center generally do? This means the only job is to optimally schedule the incoming power and monitor the flow of power from grid to other loads. Monitoring and the flow of the power. Yes. Okay. If suppose from the generation point, the economical scheduling is being done. So being the state load dispatch center, the economical scheduling it is done on this department, or it is being done only by the generating unit? Scheduling should be done by SLDC, I think. I think so. Any specific reason? The reason is for generating unit work as a base unit. It has nothing to do much about the load, because load is highly variable. So we need a separate entity which can handle the variation of load and the flow of power. If it is done at the generation, then it becomes another issue that you have to change the steam flow for other factor actually. We may use storage capacity for battery like that. If the load is the power is shifted, increase and decrease accordingly. But at the generating, it becomes very difficult to think of balancing or changing a load, scheduling of load at the generating. If suppose the faultage occur in the underground cable, underground power transmitting cable, if certain some point ground fault, Okay. Method to find out the location for the rectification purpose. Which method of fault analysis? For fault analysis is there, no? Yes. For the underground cable, if suppose the line to ground fault has occurred, it is shown into your screen. Okay. That's the line to ground fault in that, or in the drive panel, or in any panel, the line to ground fault has occurred. Circuit breaker panel. So any idea about 50 to 20 kilometer about the distance? So how you can calculate that where the particular location the fault is there? For that, we can use a distance relay that can tell about the distance of the fault from the original station location. And I don't know much about distance relay. Distance relay. Sorry, I don't know much about the name of the distance relay, example of distance relay. The distance relay is suitable for this particular application. If suppose if you have a transformer and the transformer is not working, you haven't reported the transformer is not working. Okay. So by going to the site, what are the steps you generally follow?
So for transformer working, so first we use circuit breaker to disconnect the transformer. After that, we will isolator, then use earth wire to disconnect the transformer for the main operating station. When it is done, we can check why it is not working. Good. Last question. What are the modernization should be done in the field of energy transmission that we are lagging behind? The biggest problem in my days energy sector, there are different sources of energy: wind, solar, thermal, and even thermal, geothermal. It is there, or coal, nuclear. Each source has its own way of method of producing electricity, different technology, different application. So per unit cost of the energy from different source varies. The government needs compensation, promotion for their application, and the technology being even more complex. Who has accessibility to technology? Not everyone can access each energy. Everyone, like so, government need a uniform policy for that. That is the biggest problem that government. Okay, Vikalp, you have tell the lot much of source. So is there any particular method so that we can synchronize all the source, and how the source is being synchronized with the infinite bus? Source have to be synchronized in infinite bus. Grid synchronization. Have you heard this term? What is grid synchronization? Yes, grid synchronization. Yes, I've heard it. Right. Any idea? Sorry, I'm not actually. I can't remember right now. Listen, technical point is over. One thing I want to give you the advice. Okay. While saying something, the language is not the problem. Of course, the communication is good, but it seems that you are overreacting to some answer that you know. Getting my point? How? Overreacting means it is don't speak too much technical word. You will find the loophole. They will find the loophole, and you will just like what? What can you pinpoint? See, the thing that in the last question that I've asked, you have said many more terms. Okay, the interview is good, and you are saying so much of thing you don't know the thing. So don't fall into the debt trap. Okay. Yes, I got it. That I've been doing from the beginning, that you should not use such kind of word actually, like many words, like any ambiguous word. Sorry, I will take care of that. Okay, विकल्प समझ रहे हैं ना आप? मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए नॉलेज आपका ठीक है, कुछ पॉइंट में थोड़ा आपकी आवाज थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रही है। पता होना चाहिए। आपकी आवाज थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही है। हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस यस, अब अभी आवाज आ रही है? वीडियो फ्लक्चुएट कर रही थी। यस यस। अच्छा ठीक है, सुनिए। देखिए क्या है ना कि जो भी चीज आप बोल रहे हैं, ठीक है, और इंडक्शन मोटर के बारे में कम से कम पता होना चाहिए, कुछ बेसिक एग्जांपल क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। ओके। उसके अलावा ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन भी ठीक है, बाकी एचआर पार्ट सर विल फर्दर असिस्ट यू। ओके सर। हाँ, थैंक यू। विकल्प, कब है आपका इंटरव्यू? Interview tomorrow 1:30 at the same time. Okay, tomorrow 1:30. It is going to be happen in IIT Kanpur. It is one way positive for you. Yes, I think it's a positive for me. हाँ, नेगेटिव मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नेगेटिव इसलिए कि they don't accept कि क्या बोलते हैं IIT student comes to the state electricity board. सर आपकी आवाज थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, थोड़ा अंदर से क्लियरिटी नहीं आ रही इधर से। नेगेटिव का मैं बताना चाह रहा हूँ कि IIT के प्रोफेसर वो जनरली वो सोचते हैं कि you will not being IITians, you will not join the UPPCL. Yes, yes. और एक चीज और है, आपका 11 ईयर का अप्रोक्सीमेट एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। इसके बाद आप इनिशियल फॉर्म जो स्टार्टिंग कोर्स है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यू हैव टू जस्टिफाई योर जर्नी कि सर आई हैव टू बी इन माय स्टेट। कोई भी रीजन बताना है, जो भी है आपको लगता है कि कैसे जस्टिफाई करना है।
सर क्या एग्जाम्पल हो, आप थोड़ा थोड़ा गाइड करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे मन में काफी दिन से पिन पॉइंट कर रहा है इसको, ये क्योंकि इसी बारे में थोड़ा सा मैं क्लैरिटी चाहता हूँ कि मैंने कहा से आई वांट टू वर्क बाय ओन स्टेट में, बट माय फादर सेड दैट ऐसे मत कहना, एक्चुअली थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बट मैंने कहा कि तो फिर कैसे इसको जस्टिफाई करें थोड़ा सा। हाँ, अब ये पॉइंट है, देखो मेरे हिसाब से तो आपको क्लियरली बोलना चाहिए साहब, ठीक है ना, कि सर मैंने प्राइवेट में जॉब किया, ठीक है ना, वहाँ पे टेक्निकल गेन भी किया, लेकिन मैं फिर मैंने रिसर्च के उसमें भी फील्ड में गेन किया, लेकिन फाइनली हम क्या बोलते हैं, अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आप टीचिंग तो कर रहे हैं बेसिकली, यस, ऑनलाइन टीचिंग है बस, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, द कोरोना टाइम, यस। हाँ, तो मेरे को कैसे इसको जस्टिफाई करोगे आप, क्योंकि 11 ईयर का एक्सपीरियंस और अच्छे फील्ड, अच्छे उसका एक्सपीरियंस है। कि सर आई वांट टू वर्क इन माय स्टेट, इसके अलावा कोई रीजन नहीं हो सकता। रीजन तो आप अपनी कि मेरा मेरा पर्सनल रिक्वायरमेंट है सर, आप ऐसा बोल सकते हैं हाँ, इंटरव्यू में। हाँ बस आप सीधे सिंपल बोलिए कि सर क्या बोलते हैं, माय स्टेट जॉब एंड आई वांट टू वर्क हियर, ठीक है ना, एंड आई वर्क इन मुंबई आल्सो, एंड जहाँ पे दूसरा दूसरा डिपार्टमेंट कहाँ पर था जहाँ पे मैं अपने रिसर्च में प्रोजेक्ट में काम किया था। ये तो मेनली नोएडा में था इसका सेंटर। अच्छा, रिसर्च के फील्ड में भी काम किया, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि होम स्टेट इज क्या बोलते हैं, मेरे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मेरे को होम, मेरे घर में रहना है और मेरे को यहाँ पे जॉब ज्वाइन करना है, ठीक है, अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन ढूंढना है आपको, ठीक है ना। तो सर इस तरह कह सकते हैं, कोई हार्म हार्म नहीं बोलने में। हाँ नहीं, कोई हार्म नहीं है, अब आप सीधे सीधे बोलो भाई, देखो जो रियलिटी है वो रियलिटी बताओ उनको, यस यस यस। कि सर मैंने वहाँ ज्वाइन किया, जॉब किया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस भी गेन किया, तो मुझे एक रूटीन टाइप का जॉब लगा, मेरा मन लगा या नहीं लगा, उसको बताओ। वहाँ मुझे लगता है कि एक रूटीन टाइप का जॉब होगा मुंबई में, फिर आपको लगा होगा यार क्या कर रहा हूँ मैं, मुझको छोड़ना है, आपकी इंटरनल फीलिंग यही थी या नहीं थी? यस यस नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सच पूछ रहा हूँ। यस यस, राइट, एक्चुअली दैट इज ट्रू। हाँ, और फिर आप जब रिसर्च के उसमें गया, उसमें भी आपने ठीक है, जब तक प्रोजेक्ट था तब तक काम किया, फिर उसके बाद मेरे को कुछ चैलेंजिंग मिला नहीं है, तो मैंने टीचिंग लाइन में फील्ड में गया था, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ का डे टू डे नई एक्टिविटी है, न्यू वो है, नए चेंजेस है, और हर दिन में यहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नया चैलेंज होता है, ठीक है ना। ऐसी सिंपल लाइफ नहीं है कि भाई अगर डिस्ट्रीब्यूशन में है तो कहीं पे फॉल्ट, कहीं पे कुछ, हर दिन नई नई कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो, ठीक है। तो आप बोलना कि सर चैलेंजिंग जॉब एंड आई थिंक आई मस्ट जॉइन दिस। ओके, मतलब आपको अपनी रियलिटी बतानी है, आप यस मत सोचिए। यस, एक्चुअली मैं सोच रहा था बताने की, बट माय फादर इंसिस्टेड इस तरह से ना बोलो, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा बोलने में। हाँ, बट ये मत बोलो कि मैं अपने स्टेट में जॉब करना चाहता हूँ, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, हाँ, आप ये बोलो कि मैंने वहाँ पे जॉब किया, लेकिन वो वहाँ पे मुझे एक रूटीन टाइप का जॉब लगा, कुछ दिनों बाद में बोर हो गया, मैंने दूसरा जॉब ज्वाइन किया, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी मेरे को एक ही टाइप का जॉब मिला, लेकिन मुझे लगता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्या बोलते हैं, आप अपने फ्रेंड्स का या किसी का अपने उसका बता सकते हैं कि हर मतलब नए नए चैलेंजेस मिलते रहते हैं सर। कैन आई गिव माय रेफरेंस ऑफ फ्रेंड जो काम करते हैं, मैं बता सकता हूँ उसके बारे में हाँ कि हाँ हाँ हाँ, कि नए नए चैलेंज मिलते रहते हैं सर, इसमें ये इसलिए मेरे को ये जॉब। ये पॉइंट मुझे भी शुरू से लग रहा था, इसका कोई मुझे सही आंसर मिल नहीं रहा था, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चैलेंज तो रोज नए डेली कुछ ना कुछ मिलेगा, कहीं पे किसी टाइप का फॉल्ट आ जाएगा, सारी इंजीनियरिंग लगा लोगे आप, फिर भी लगेगा यार फॉल्ट ठीक नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। तो इस तरह क्वेश्चन जब पूछे तब बताएं कि हम अपने आप से उनको नहीं नहीं, जब वो पूछेंगे तब बता, सब बताना। तब बता, ठीक है। और ओके, मुझे लगता है और तो सब ठीक है, आपका नॉलेज भी आपने सही गेन कर रखी है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लीजिए, अच्छा, नेटवर्क बताइए, और
पावर सिस्टम जो आपको अच्छा लगता है वो बताइए, 2-3 सब्जेक्ट लिए और पूरा वाश कर देंगे ना कि नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम जो अच्छे से पढ़ रखे हैं अभी अच्छा अच्छा ठीक है ना, उनको बताइए। तो साथ में 1-2 सब्जेक्ट कोर वाले, ठीक है ना, ओके जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन अगर आपने सही पढ़ा है या पावर सिस्टम आपने सही पढ़ा है तो पावर सिस्टम बताइए, पावर सिस्टम मशीन बताया तो इलेक्ट्रिक मशीन बताइए, ठीक है। पावर सिस्टम में मुझे लगता है ठीक है, आप वो आपका ऊपर है, आपको कैसे लगता है, ठीक है। यस यस और एक चीज और है, 2-3 चीजें नई नई चीजें जो डेवलप करी, स्मार्ट मीटर क्या होता है, ठीक है ना, यस यस ठीक है ना। व्हाट इज योर आइडिया टू रिड्यूस द थेफ्ट ऑफ, हाउ द टेक्नोलॉजी विल बी यूजफुल टू रिड्यूस द थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। यस यस तो आप इसमें बता सकते हैं कि दो दो तरीके से किया जा सकता है कि सर एक तो सिस्टम को रोबस्ट बना दिया जाए जिससे कि हमारा कोई भी सिस्टम कभी फेलियर ना हो सिस्टम में, ठीक है ना। दूसरा हम प्रॉपर मॉनिटरिंग करें थ्रू एनर्जी मीटर, ठीक है ना। तो जो कॉमन एनर्जी मीटर है वो बता देगा कि कहाँ पे एनर्जी का सीपेज हो रहा है, कहाँ पे लीक हो रहा है, कहाँ पे वो हो रहा है, तो उस एरिया में हमें आइडिया मिल जाएगा कि इस एरिया में पर्टिकुलरली एनर्जी की चोरी हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि सारे मीटर्स लगे होंगे, उनका समेशन ऑफ मीटर एक जगह आएगा तो पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर मीटर पे कहाँ पे, बाय प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द एनर्जी कंजप्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप, तो आपसे मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे और ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। और दूसरा इसके बारे में भी आप एक बार साइट से देख लेना कितनी पावर रिक्वायरमेंट है यूपी गवर्नमेंट की, कितना इनके यहाँ जनरेशन होता है और हाउ मच पावर दे इंपोर्ट या परचेज थ्रू पावर दे, ठीक है ना। इसका आइडिया साइट से मिल जाएगा, ओके ठीक है। एक बार यूपीपीसीएल की साइट में जाना, कितनी पावर रिक्वायरमेंट है यूपी की और कितना हम जनरेट करते हैं और कितना हमारा ओके ओके बाहर से परचेज करते हैं, ओके ठीक है। और पावर मिनिस्टर कौन है तो पता होना चाहिए, यस ठीक है ना, अरविंद कुमार शर्मा, एक शर्मा हाँ एक शर्मा, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े आइडिया आपको साइट से लेगा। वैसे आपका प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, कॉन्फिडेंट भी है और आंसर भी ठीक कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट पोलाइटली कभी कह सकते हैं कि कोई आंसर नहीं आ रहा तो सॉरी सर अभी मैं मैं रिकॉल नहीं करता पोलाइटनेस ले आइए बस, ठीक है ना। चलिए, गुड लक, ऑल द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक। और कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। और कुछ नहीं, मुझे यही इसी में डाउट था कि कैसे अपने वो इस जो हम बताया ना कि आप इतने बाद यहाँ पे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, वो रीजन मुझे थोड़ा सा आप उसको फिर डिटेल में बताइए कि सर समझ इनिशियली गए आई वो वाज एक्साइटेड टू डू द वर्क विद द कोर कंपनी बट लेटर ऑन आई रियलाइज देयर इज क्या बोलते हैं रूटीन टाइप का जॉब हो गया था, तो देयर वर नो एक्साइटमेंट, तो आई लेफ्ट दैट जॉब। तो फिर मैं रिसर्च में गया, वहाँ पे रिसर्च का वर्क कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने क्या बोलते हैं टीचिंग लाइन ज्वाइन कर लिया। लेकिन मीनवाइल फ्रॉम द माय फ्रेंड्स आई गॉट द किया कि ये जो चैलेंजिंग जॉब्स होते हैं यहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, हर डे कोई ना कोई नया चैनल मिलता है, कहीं पे फॉल्ट हो गया, कहीं पे वो हो गया, कहीं पे किसी को इम्प्रूवमेंट करना, कहीं पे कुछ करना, तो इस तरीके से नए चैलेंज होते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अपने आप का सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ये बोलता हूँ, ठीक है। वो फिर बोलेंगे आपके फ्रेंड्स तो आपसे सीनियर हो जाएंगे, है ना। हाँ तो बोलना सर वो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीनियर है तो है। I worked with many people that those was junior and senior with during my job, so I already worked in such atmosphere. इस तरह से तो उसको ऐसे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है सचान, गुड लक, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू सर।